So a very good morning to all the viewers who are watching my video at present. I am from the team of Peace Iceland with Integrity. So in this video, we will be analyzing certain things, certain topics which are prior important regarding the poor state of India's fiscal federalism. तो इस वीडियो में हम खास करके फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल पॉलिसी एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का जो पॉलिसीज है लागू किया गया है या फिर लागू किया जा रहा है with the interference as well as with the involvement of एनडीए गवर्नमेंट, खास करके जो ब्यूरोक्रेट्स है उन्हीं के दौरान या फिर उन्हीं के अंतर्गत ये सारा निम्नलिखित फिजिकल पॉलिसीज का रूपांतरण हो रहा है। तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, please subscribe the channel, share the channel and like the channel as soon as possible because the number of subscribers in my channel is very low, right? So it doesn't impact me whether it is less or not, but still I want to provide you a special information, special concern regarding how actually the editorial analysis has been going on and what the certain points which usually make us clear regarding the current affairs statements whenever you are going to appear in the mains examination, and the points should be pointified, the points should be highlighted such that whenever you are going to have such a questions regarding the federalism, regarding the fiscal policies, you should not have to doubt for anything, right? ठीक है, तो फिर आपको मैं इसमें क्या यूजुअली बताना चाहता हूँ कि अब जब जब आप मेंस लिखने जाओगे तो फिर आपका जो पॉइंट वाइज नोटिफिकेशन होगा, पॉइंट वाइज एनालिसिस होगा, आपको उसमें डिफिकल्ट फेस नहीं किया जा सकता या फिर डिफिकल्ट को सामना भी नहीं कर पाओगे क्योंकि जब आप पॉइंट्स को रिवैम्प करोगे, रिन्यू करोगे, तो अब आपका माइंड भी सेटल हो जाए कि हाँ इस पॉइंट या फिर इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा देना है, ये फेडरलिज्म के रिलेटेड है, फेडरलिज्म से यूजुअली आता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट हियर आई एम यूजुअली वांट टू से रिगार्डिंग द पूर स्टेट ऑफ इंडियाज फिजिकल फेडरलिज्म एंड द कंसर्न ऑफ फाउंडिंग फादर। ओके, लेट मी टेक माय पेन टू एक्सप्लेन यू एंड हाईलाइट यू। सो द कंसर्न ऑफ फाउंडिंग फादर्स एंड एड्रेसिंग सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटीज are being forgotten in today's physical policies। ठीक है, सो प्रेजेंटली क्या हो रहा है? ठीक है, प्रेजेंटली यूजुअली सिचुएशन क्या है? सो पास्ट में यूजुअली कैसा था सिचुएशन? ठीक है, व्हाट द सिचुएशन इन पास्ट, तो उसके बाद प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, सो किसके बारे में? पहला है फेडरलिज्म या फिर वी कैन से दैट फिजिकल पॉलिसीज। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि पैरेलली विल बी डिस्कसिंग अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज फिजिकल पॉलिसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसीज यूजुअली टैक्सेशन के बारे में, गवर्नमेंट रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहा है। सो यूजुअली द टैक्सेशन एज वेल एज द हाई पे टैक्सेस रेवेन्यू सिस्टम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, so those all things are been discussed in the physical policies, while in monetary policies what amount is been treasured, what amount is been stored and how much it is been effectively monitored. Okay, so those all things comes under what? Monetary policies, like interest rate, cost of borrowing, like high interest rate with we can say that homeowners, we can say distribution policies agar if we discuss, then after limited impacts, monetary policies with the set of independent central banks. Okay, so we can say that interest rate may not work with the liquidity trap, so those all comes under what? Food, we can say that effects, we can say to tools, distribution, exchange rate, supply side, politics. Okay, so those all things comes under what? Monetary policies. Okay, so in parallelly we also will be discussing about fiscal policies which usually impacts in high taxation, low taxation, high government spending, लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो सभी यूजुअली आता है फिजिकल पॉलिसीज एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसीज। सो अगर हम पास्ट एज वेल एज फ्यूचर में अगर रेफरेंस करेंगे तो उसी के बारे में यूजुअली एनालिसिस किया गया है इसी वीडियो में। ठीक है, so these are the key points of the 28 July 2022। so 28 July 2022 का की एक्सपेक्ट्स क्या है? यूजुअली इंडियन रिपब्लिक एंटरिंग ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि अंबेडकर बोले थे।
वाई बोले थे, क्यों बोले थे, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ पॉइंट वाइज रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें ये दर्शाया गया है कि in politics we will have equalities and a social economic life। ओके, तो इसमें क्या दिया है, सोशल इकोनॉमिक लाइफ को इक्वलिटी बैलेंस करने के लिए या फिर बैलेंस होने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या होना चाहिए, रेवेन्यू सिस्टम का जो है वो भी अंतर मीन्स वो भी पैरेलली होना चाहिए या फिर इक्वली होना चाहिए या फिर इक्विलिब्रियम अटेंड करना चाहिए। So here what actually the social economic life usually maintained, how it is been maintained, okay, so that usually reference that is only been referred with the we can say yeah, let me clear this all। okay, so those all things are been illustrated or mentioned here। ठीक है, उन्हीं के बारे में usually दर्शाया गया है कि usually reference with past life, that's what here it is written about contradiction, इसीलिए contradiction के बारे में usually बताया गया है अम्बेडकर से। तो yeah, we have equality, inequality, these conflict demanded attention, failed to do so, and those denied will blow up the structure of political democracy। So definitely it is blowing now, and definitely the past blowing in the sense the situations also hindering the government's policies, how the situation like COVID-19 pre and post, then after new medical surveillance, environmental effect, so those all things comes into existence regarding the social and economic life balance। Okay, so that's what the key point of 28 July 2022। So this is the statement which is I have already fetched from the Hindu newspaper editorial analysis। So actually what it says about an asymmetric federalism inheritance to the constitution was also accelerated and mutually reinforced with political centralization since 2014, making the union government extractive rather than enabling, while state lost their capacity to generate revenue by surrendering their rights in the wake of goods and service tax regime. This expenditure pattern too was distorted by the union intro, particularly through its centrally sponsored scheme। So here I just want to give an advice, I just want to give my point। So goods and service tax will be impacted, goods and service tax in food and grains, so everything will be calculated, everything will be we can say that everything will be inculcated itself in the necessities of every citizen। so when we discuss about necessities, it becomes a demand supply chain curve। in economic we have already learned for the past 10 to 20 videos I have been saying about demand and supply curves। so whenever the demand increases, the supply is also been increasing, so if the supply is also been increasing and the demand is also been increasing, the effect of money, the cost is definitely playing a crucial role in this। so जब हम डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है तो फिर रेट भी उतनी ज्यादा ही बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। if they increases, definitely it gives an impactful journey to the revenue generation। that's the reason why every state, while state lost their capacity to generate revenue। ठीक है, तो हर एक स्टेट जो कि है रेवेन्यू जनरेशन को अभी अभी यूजुअली स्थगित किया गया है, क्योंकि जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स हर एक फूड ग्रेन में आएगा, डेफिनेटली इज गोइंग टू इम्पैक्ट, डेफिनेटली होगा। किस लिए होगा आपको भी पता है। तो मैं आपको ये भी मीन्स अपना पॉइंट्स जो है वो अपना पॉइंट्स में यूजुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेन एवर वी आर मीन्स द नीड्स लाइक पेट्रोलियम, व्हाई दे हैव डिक्रीज द रेट। तो जैसे कि पता है अगर हम भी गाड़ी चलाते हैं और आप भी गाड़ी चलाते हो, ठीक है, अगर आप पेट्रोलियम के प्राइस ही बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करोगे या फिर इंक्रीज इफ मींस या if you are going to increase the price of petrol more and more and more and more, if I'm saying if, definitely it is going to impact the a common man। so from that a common man can understand the value of money, I may, okay, a young kid, or you can say that a kid or a man or a young boy who is aged between 12 to 18 is riding a bike। just imagine he is riding a bike, petroleum bike, which usually
So you can understand how actually the crucial of economy has been increasing, how the demand is increasing regarding the speed of bike, which usually attracts the girl, and the girl and the boy used to attracts with the girl, and I know what the consequence is, right? So जब आप गाड़ी चलाते हो चश्मा लगा के, अगर आप 15 साल के हो 14 साल के हो गाड़ी चलाते हो, हाँ देखेंगे, तुमको जरूर देखेंगे, जो भी चलने या फिर जो भी जाते हैं ना बगल में, ठीक है, वो जरूर देखेंगे आपको, लेकिन आपको भी देखना चाहिए, राइट? यू आल्सो शुड हैव टू वॉच अबाउट योर फ्यूचर। यस, यस, स्पेट्स में अंधा हो जाओगे, क्योंकि वो स्माइल है ना, वो जरूर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पेट्रोलियम का अगर प्राइस जब इंक्रीज करोगे, तो वो स्टाइल थोड़ा घट जाएगा, या फिर वो लाइफ जो है बच जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्चुअली वाज, दैट्स ऑल अबाउट माय पॉइंट, राइट? आई एम नॉट बीन इंटरफेयरिंग एनी अदर्स व्यू इन दैट, ओके? सो आई एम नॉट बीन, yes, somewhat in some time I am also been involved in that, but not more time, but many who have money, usually they spend lot of money in these things only. So I hope if the government increases the money in the, rather than in GST, in petroleum, then definitely our India will definitely grow, even in my view. So yes, these points I have extracted, okay, from news clipping. So these 3 points will be discussing in a very fast and furious manner. So here, just I want to discuss about political institutions. So politicalized institution is just about historical of two pillars of planning commission and the financial and the physical commission, but the warning of the planning since 1990s to abolition of 2014 led to the physical commission becoming a major mean of physical transfer as the commission itself broadened its scope of sharing all the taxes since 2000, and its original design of two taxes, income and the union excise duties. Today the physical commission became the politicalized institution with the arbitraries and inherent bias towards union government. The original intention of addressing inequalities, a lottery ideas, indeed was turned on its head, and the metaphor to the words gone ingress to taxation due to centralized fiscal policies. I hope you have got an idea regarding what actually the past from 1990s to 2014, how actually India has been watched with taxation, how actually the low cost economy affected, low cost taxation rate usually affected, and how actually it is impacting today's world scenario. That's what here it is been written. जैसे कि usually 1990 से लेकर 2014 तक जैसे कि पॉलिसीज लागू किया गया था, वो usually with means they haven't looked before the taxation rate. So even though the prime minister is an economist, okay, even though the prime minister is economist, they haven't looked before the taxation rate. ठीक है, पहली बात है टैक्सेशन रेट के बारे में डिस्कस भी नहीं किया, वो जो कि डिस्कशन नहीं किया गया है उस समय, वो इधर इम्पैक्ट हो रहा है फ्रॉम 2014 टू प्रेजेंट 2022। वो ही यूजुअली प्रेजेंट गवर्नमेंट दर्शा रहा है, या फिर प्रेजेंट गवर्नमेंट बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द finance minister Nirmala Sitharaman ji. So this what about the politicalized institution. Then after allowing the physical capacity, just behind just the scenario of what the goods and service tax and impacting with the different subsidies, with the different, we can say that GDPs, or we can say that state to state income capacity, as well as beyond the scenario of what actually the government is watching. So those all things are been mentioned here. जैसे कि हम बोलते हैं हर एक स्टेट का इनकम लेवल कैसा है, हर एक स्टेट का पॉपुलेशन रेशियो कैसा है, हर एक स्टेट का डिमांड एंड सप्लाई कर्व कैसा है, हर एक स्टेट का कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकने वाला है, विच विथ रेफरेंस टू द प्रोडक्शन एनवायरमेंट, ठीक है? सो उन सभी के बारे में यूजुअली डिस्कस किया गया है फिजिकल कैपेसिटी के बारे में. सो आई होप दिस इज एनफ फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर.
video analysis. So I just sorry I have taken a lot of time of yours. Just I want to minimize it to 10 minutes, but I am extending this. Okay, just sorry, just apologize me. But if you are new to this channel, please subscribe the channel, like the channel, share the channel as soon as possible, such that n number of students can have this effective learning skill too. If I am if I fail, if I have done anything wrong, so just apologize me. Just me, I'm sorry for you all. ठीक है, धन्यवाद।